That's true. Then our Argenti fans are in for a fatal surprise in version 1.5. In Night of Universal Hallucinations, Trailblazers will encounter Argenti en route to a Washtopia. Wait a second. A wash a what now? I shower every day. Slow down there, Trailblazer. Have you never asked yourself how the Astral Express stays so clean and shiny? Because Pom Pom's always cleaning up after us? It's because the train stops at Washtopias along its journey. Washtopias specialize in cleaning interstellar craft. There are all kinds of fast-acting, lemon-scented, antibacterial... We're getting off topic! All you need to know is that the encounter with Argenti is one of excitement and wonder. And a little bird tells me he's set for a showdown with the entire crew. I don't get it. Why are we always either in a fight or on the way to one? A fight, you say? Far too poor a term. What you meant to say was... Hello, Mr. Savage, Anika, Abdullah, David. Anyway, वाओ आर्कन भाई क्या इंग्लिश बोल रहे हैं मैं बहुत बढ़िया इंग्लिश बोल रहा हूँ अंग्रेजी हेलो एवरीवन गेंशिन कहाँ है गेंशिन यहाँ पर है गेंशिन यहाँ स्टार्ट होगी Anyway, with the driller's blessing, let's move straight on to the version 1.5. गेंशिन अभी स्टार्ट होने वाला 8 मिनट में The program will begin in 8 minutes. तो जब तक 8 मिनट में होगा तब तक वे कर लेते हैं HSR और गेंशिन दोनों का एक ही दिन हो रहा है ना लाइव यही प्रॉब्लम है इसका भी हो रहा है गेंशिन का भी हो रहा है कितने बजे लाइव स्ट्रीम 5:30 तो हो गए ना 5:30 नहीं है 8 मिनट्स 3 सेकंड में स्टार्ट होगा 5:40 पे था इसका लाइव स्ट्रीम ये 5:40 पे है ये तो अभी चल रहा है HSR का भी चल रहा है हेलो वेलकम एवरीवन वेलकम आओ लाइफ ऑफ विनर सौम्य कर्माकर वेलकम ये तो HSR है अरे भाई चलेगा दोनों का सेम डे है भूल गए क्या चाय पी लो फ्रेंड्स चाय पी लो I wonder if her game accounts are doing any better. You want to ask her the next time you see her? You first. Now, it's I just saw D-Look in HSR, yes. Oh, Silver Wolf दोबारा आ रही है. Silver Wolf दोबारा आ रही है guys. जिसको नहीं निकाली निकाल सकते हो. While in the second phase of version 1.5, the 5-star light cone, an instance before games, will enter the light cone event warp. At the same time, the drop rate for the 5-star light cone incessant rain will be boosted. All aboard! The train is about to make the jump. And here's some like दबा जल्दी से. Starting from 1.5 within the team selection. प्रो बताओ ना कैसा लगा शिंचो का न्यू बढ़िया था. Every character will have HSR का D-Look yes. कोई पूछ रहा था ना कि यार HSR के अंदर कोई करता जिंगलियो देखी उसमें गेंशिन के अंदर अब पता लगा कि कैसे ये इंस्पिरेशन लेते हैं अपने ही कैरेक्टर से सारे के सारे कभी एक जगह कोई और चल रहा होता है वो कैरेक्टर फिर किसी कहीं और आ जाता है ऐसे इंस्पिरेशन लेते हैं अपने खुद के कैरेक्टर से ये स्टार्ट होगी 6 मिनट 26 सेकंड के अंदर 72,000 लोग यहाँ देख रहे हैं 66,000 यहाँ देख रहे हैं वाह If Trailblazers are ever curious to check which friends have visited the Express, the guest book has a record. Thank you, Suzine. Thank you. Such a neat 1K idea. done. Yes. Additionally, the Forgotten Hall will also. Ronnie, welcome. Guys, सब लोग like दबा दो. Like. Hall combat. Trailblazers can now choose to re-challenge. Re-challenge? It's like this. If things aren't going too smooth when challenging a certain stage, Trailblazers can choose to return to the Forgotten Hall map and restart the challenge. When re-challenging, previously used technique points are replenished. Reset button, memory of chaos के अंदर. Technique strategy, perhaps. यही तो चाहिए था. Stopping and तुम लोग ये चीज नोटिस कर रहे हो गेंशिन के अंदर जितनी भसड़ है ना वो सारी की सारी चीजों को HSR ठीक कर रहा है और गेंशिन वाले नहीं कर रहे उसको. Imagine that. Entering the Forgotten Hall, your combat lineup for each stage is now remembered. बोरिंग 6 मिनट कब बीतेगा ये देख के बीतेगा ओम भाई 1K डन इतना जल्दी कॉन्गो थैंक यू 5 मिनट 11 सेकंड रह गए हैं यहाँ पे लड्डू खा लो फ्रेंड्स चने का चाय के साथ फ्रेंड्स खा लो
Well, looks like it's time for our final redemption code. See you on the other side, Trailblazers. redemption code 6B 9B FPK. Okay, 6B 9B FPK 58Q3T 58 58 what the hell is this? क्या हो रहा है ये? अरे गेम कहाँ है? 58Q3T Q3T ओके Q3T कंट्रोल C और मैं इसको यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ HSR कोड्स के अंदर, यहाँ से ले लेना। Genshin devs lazy, HSR dev need for speed। भाई कौन सी स्ट्रीम चल रही है यार? ये Honkai स्टार रील का वो चल रहा है, क्या कहते हैं, कोड आ रहा है। ये हो गया, चलो इसको बंद कर देता हूँ, वेट, इसका काम हो गया। Hey folks, I'm back. Me too. Me three. Genshin की स्टार्ट हो रही है 3 मिनट्स 43 सेकंड्स के You're अंदर। just in time to help us wrap up version 1.5 special program. चलो आते हैं, जरा कल का That पढ़ना है। time ओके ओम already? भाई, ओके I ओके was just ओके। getting started. Be my भाई guest, शॉप से न्यूबी के लिए क्रेट वाले Trailblazers. वेपन लो, ये This बैनी sounds निकालना pretty चाहिए, दोनों नहीं है भाई। Aren't बैनी you निकालो, forgetting something, बैनी नहीं है, बैनी Albert? निकालो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। I'm pretty sure you न्यूलेट के didn't mention क्रेट वेपन से ज्यादा इंपॉर्टेंट बैनी है। What thing? टाइपिंग इशू, विजिबिलिटी इशू। Thing. अब तुम्हारे लिए मैं क्या इशू बताऊं, है बताओ। Good offer. सब्सक्राइबर इशू। In version 1.5, Trailblazers can get their hands भाई, on 10 10 pulls। warps through the check-in event. There it is. 10 पुल्स फिर से भाई, ये हर पैच के अंदर 10 पुल्स दे रहे हैं। एक पैच गया अब तक जिसमें 10 पुल्स नहीं मिले, Love in version 1.5. हर पैच में 10 पुल्स आ रहे Anything in हैं। today's IPM programs tickle your fancy, guys? You had me at Ghost Hunting Squad. I am so Guys, like दबा दो, ready किसी for a नहीं किया अब तो spooky stream. दबा डालो, दबा डालो, Sign me up. गला दबा As दो for लाइक me, का। it was all about those unique ये 2 मिनट में स्टार्ट होगा अभी, characters. बहुत धीरे धीरे नहीं बीत रहे 8 मिनट। Story. Hanya's 10 lords 1,08,000 लोग expertise इस टाइम and देख रहे हैं यहाँ पे Argentine's गेंशिन की, search for the beauty. और 65,000 लोग यहाँ देख रहे Can't हैं। wait to see them in आधे यहाँ से person. उठ के वहाँ जाने वाले हैं बहुत जल्दी। And with that, Trailblazers, I Congratulations भाई, ऑर्कन भाई 1 के सब्सक्राइबर। थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Thank माही, you for hello. supporting the IBM. माही जरा हमारा सब्सक्राइबर See you in काउंट the देखो। next one. See ya. माही लुक एट आवर सब्सक्राइबर काउंट। भाई नो बट क्या टाइम किया है। स्टार रेल की एंड हुई, स्टार रेल की एंड हुई और गेंशिन की स्टार्ट होने वाली है। अब सारे लोग यहाँ आएंगे। लवनीत भाई वेलकम वेलकम। आर्कन फुरीना की पिक का लिंक दो यार। गूगल क्या है, मैंने ये डाल दो, मैस्करेड ऑफ द गिल्टी आ जाएगी। आयुष्मान ताबा थैंक यू भाई, थैंक यू। लवनीत भाई थैंक यू। लेट्स गो, कोड्स दो। अरे आने तो दो भाई, कोड्स तो दे देंगे। एक काम करते, पीछे मैं भी गेंशिन ऑन कर देता हूँ। जैसे जैसे कोड्स आते जाएंगे मैं अपना साथ साथ करता जाऊंगा और कॉपी करके उसमें पेस्ट भी करता जाऊंगा। मैं कर दूंगा इस बार पेस्ट। थैंक यू माही, थैंक यू। विच वन पुल, अर्जेंटी और हो? यार मुझे हो बेटर लग रही है, बहुत ज़्यादा बेटर लग रही है, बिकॉज शी इज गिविंग द एबिलिटी टू रिकवर अ स्किल पॉइंट। इमेजिन। जिंतु भाई थैंक यू सो मच, थैंक यू। इजी स्केप रुआन में ओनली। रुआन में का मैंने किट नहीं देखा, वो होगा देखा। वो इज अ गुड अबंडेंस कैरेक्टर और गेम में बहुत ही डेस्परेटली एक अच्छे 5 स्टार हीलर की जरूरत थी बाइलू के अलावा। तो हो अगर किसी को निकालना तो निकाल सकते। रेशु भाई वेलकम वेलकम। आप भी समोसा खिलाओ। मैं तो देखो तुम्हें लड्डू खिला सकता हूँ चने का, जो मैं खा रहा हूँ चाय के साथ। लेट्स गो। स्टार्ट हुई 42 सेकेंड्स। गाइज अपना अपना खोल के रखो, मेरा मतलब अपना अपना गेंशिन का अकाउंट खोल के रखो कोड्स के लिए। वो स्किल पॉइंट रिकवर करती है। यस, वो अपने एनिमी को मार्क करती है। उस एनिमी को जो भी कैरेक्टर हिट करेगा तुम्हारा प्लेयर, वो एक स्किल पॉइंट रिकवर करेगा। खिलाओ, वही खिलाओ, आ जाओ। वेलकम एवरीवन, वेलकम वेलकम वेलकम। इसको मैं जरा, मेरी गेम इतनी अटक क्यों रही है बे? ये क्या हो रहा है? मेरे FPS ऐसे जमीन के अंदर कैसे घुस गए? ओके अब ठीक है। बहुत सारी चीज़ें बंद कर देता हूँ। स्टार रील बंद कर देता हूँ। अच्छा लाइट रूम खुला हुआ है, इसको भी बंद कर देता हूँ।
चल गया भाई, चल गया। लाइट रूम, यस, स्किप दिस टाइम। अरे आवाज क्यों नहीं आ रही? God of justice, we'll get to the bottom of this matter. No detail shall escape me. Yes, that sounds perfect. A god must be firm. A god must not allow any detail to slip through the cracks. My dear citizens, just as the will of a god remains opaque to the understanding of mere mortals, so too is truth unmoved by even the strongest of wills. I will now speak to the defendant. If you honor the values of truth, justice, Hello everyone, and hello, divinity, welcome, then जितने you लोग are नए हैं। compelled to provide an accurate account of your actions. Hey, that's not bad. Now what's next? It's so hard to predict how people are going to react. What should I say during the trial tomorrow? Lady Furina, what are you doing? Oh, Nervillette! As the god of justice, it is Monsieur only Dragon. expected that I should remain informed of every trial and make the necessary preparations. Is there something that you need in? If you wish to Yes. seek an audience with me, then please make an appointment with Sir Intendant Chevalmeron in advance. According to the judgment of the Oratrice Mécanique de l'Alice Cardinal, the Hydro Arkhon to be punished via the death sentence. What? Death sentence? You and I both know that there may be issues with the Primordial Sea. Everyone on the street who happened to be close to the water didn't have a chance to escape. As the water levels rose, they suddenly disappeared. Shouldn't gods be all-powerful? What's done is done. Just trust in me, your Archon. Never mind whether you can truly convince yourself to or not. वाह भाई वाह। डेथ सेंटेंस दे रहे इसको। ओरेट्रीस ने फुरीना को डेथ सेंटेंस दे दिया। The show begins. Shower me with praise. क्या फॉलो अप है वो? Let my name फुरीना की किट दिखा रहे हैं फॉलो अप में। कितने बड़ा बम गिरा के हमारे ऊपर फुरीना की किट दिखा रहे हैं। What a way to start a live stream. सही बात है, बिल्कुल सही बात है। What a damn way to start a live stream. say cheese. Breaking news. I know you're not a local, but I'd avoid getting too close to any Navia. water that looks strange all the same. There's something ominous about it. Well, the water, I mean. The prophecy. Yes. What has been prophesized will be fulfilled. I, Furina, will use this trial to show the world the true meaning Do of not resist. justice. This judgment is fair people- and just. What is the meaning you would call You have this? never been as Justice? superficial as you have presented yourself to be. No more excuses. Then why should we acknowledge it? भाई साहब हाइप हाइप। Applaud and rejoice. Wait just a moment. This isn't right. The trial of the Hydro Archon. Seem to remember the floor will now This trial is- begin. I now understand the true purpose behind this position. सील टूट गई, सील टूट गई। You are वेल बाहर आ गई। this one, Fussalor. ये कौन था? क्लोरीन? अरे चाइल्ड। Everyone's dead. Papa, what should I do? The prophecy that you've been fretting over should now be in full swing. I suppose this would also be the justice that belongs to you. All will eventually end in a magnificent and dramatic Fontaine डूब trial. गया। Farewell, Nervillette. I Fontaine hope you've डूब गया। enjoyed the part you played these 500 years. भाई भाई कोई होए ओवर्स वालों से सीखा हाइप क्रिएट करना। कोई होए ओवर से सीखे हाइप क्रिएट करना। VA97K
97K JNF24 JNF24 UV। गॉड डैम भाई, क्वींसी की हाइप क्रिएट करना, क्या हाइप क्रिएट कर रहे हैं। ब्रो चाइल्ड हमेशा उंगली करता है भाई। स्कर्फ तुम मतलब इमेजिन कर रहे हो, स्टार्ट इन्होंने किससे किया, इनका स्टार्ट किससे था। अकॉर्डिंग टू द Justice of Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinal, death sentence to the Hydro Hey Archon. travelers, welcome to the Genshin Impact version 4.2 special program. Woo! Yay! I'm Sarah Miller Cruz, the voice of the female traveler Lumine, and I'm joined today by two guests to bring you the latest news for the upcoming version. Okay, why don't you introduce yourself? Archon. All right, Probably. Sounds good. I'll start. That trailer was epic. Hey everyone, I'm doubt. Amberly Connors, the voice of Furina, and I am super excited to be on this special program today. Travelers already met the Hydro Archon at the start of their journey in Fontaine. वो न्यू लड़की का थंबनेल बनाएगा as the अब, story मतलब continues, कौन थंबनेल how will बनाएगा? the special god of Earth the Crisis वो कौन थी? वो तो मुझे भी नहीं foretold पता लगा कौन थी वो। prophecy. Yeah, I hope everyone's excited to see what happens next. I mean, I sure am. लेकिन एक चीज है, पता है क्या, ये लोग ना बहुत ज्यादा मिसलीड भी करते हैं। ट्रेलर के साथ ट्रेलर के अंदर कई बार ऐसी चीजें दिखाते हैं जो एक्चुअली में गेम के अंदर या तो आती नहीं, या बहुत देर के बाद आती है, या बिल्कुल ही किसी अलग कॉन्टेक्स्ट के अंदर आती है। अब इन्होंने फॉन्टेन को डूबा हुआ दिखाया, हमें देख के लगेगा ओ भाई फॉन्टेन डूब गया, फॉन्टेन डूब गया, लेकिन एक्चुअली में ये हो सकता है कि या तो फॉन्टेन एक बार पास्ट में जब डूबा था तब के दिखा रहे हो, लेकिन ये नए वाला फॉन्टेन था जो डूबा हुआ दिखाया, ठीक है। तो हो सकता है कि ये किसी के ड्रीम के अंदर दिखा रहे हो। दे आर जस्ट क्रिएटिंग अ शॉक वैल्यू कि बंदा देख के शॉक हो जाए। She's really busy as Fontaine's Archon, and she's a pretty big celebrity at the Opera House. So the special program team Like gave Nahi that me an Treeborn, yes. itinerary to follow, and किसी को याद है वो जो सीन आया था जिसमें नाही जो इरिमुसल को चलते हुए दिखाया था और आगे दोतोरे खड़ा था, वो सीन कहीं नहीं आया। पूरे सुमेरु के अंदर वो सीन कहीं नजर नहीं आया जिसमें इरिमुसल को जलते हुए दिखाया था। याद है या भूल गए? So let's take a look at the first item. फर्स्ट आइटम? Oh, looks like Ray called it. Okay. Wow. ये तो इवेंट्स के बारे में बता रहे हैं। There is nothing more important to Furina than attending trials at the Opera House. वो उस अननोन गॉड की जैसे दिख रही थी जिसने This प्रिंस को trial रोका था is a ना। little different from the usual. चैप्टर आर्कन क्वेस्ट चैप्टर 4 मैस्करेड ऑफ द गिल्टी, जो कि फाइनल एक्ट होने वाला है, इसके बाद कुछ नहीं I आएगा। keep looking at the water rushing in. I'm like, what's happening? Yes, it looks like there's some spotlights and like is like a curtain. Seems like, you know. लाइक चाइल्ड मर गया था लास्ट ट्रेलर में। किसने बोला लास्ट ट्रेलर में चाइल्ड मर गया था? जिंदा है वो। Behind the scenes, maybe? Very serious. He's always keeping an eye on stuff and always just a little bit disappointed. Michael, welcome to the stream. Sabas. Yes. Fair. Okay, in version 4.2, travelers will get to experience Act 5 of the Fontaine Archon quest, Masquerade of the Guilty. We'll team up with Fontainian friends to delve deeper into the hurricane of events and face the impending destruction. बहुत hype है, बहुत ज़्यादा hype. Travelers will gradually unveil new facts behind this crisis and encounter an evil that has been lurking in the swirling depths. Ooh. I know. यार ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कि फॉन्टेन अभी 1-2 महीने पहले तो रिलीज हुआ था, कुछ ज्यादा जल्दी खत्म हो रहा है। अरे भैया टेक्निकली 2 महीने पहले तो रिलीज हुआ, अभी तो 4.2 की 4.2 है। यस अभी 2 महीने तो हुए हैं। And this is possibly the greatest crisis we faced in our journey through Teyvat. 2 ही महीने हुए इसको आए। Definitely. In version 4.1, we learned about this precarious situation involving the rising primordial seawater. Neverlet barely arrived in time to hold back the seawater from engulfing the fortress of Meripede, but still, the water has reached Poisson. Luckily, the crisis was averted by Navia's leadership of the Spina de Rosula. Though we probably can't Only dismiss 4.2 the पे खत्म। assistance provided by सुमेरु में Nvidia. सुमेरु बहुत लंबी चली थी आर्कन क्वेस्ट। Whatever her end goal may be, it seems like she sincerely इस लाइव स्ट्रीम का एक wants वीक to वेट save भी किया था। Fontaine हाँ from ये the भी है। prophecy. But ये तो there's आते से only ही so चले much गया। that we can हाँ say. फॉन्टेन को जल्दी आगे Travelers will गायब have सा to नहीं लग go रहा and जैसे कि आया savor the खत्म हो version गया। themselves to discover the clues, adventures, मुझे and ऐसा लगता है कि stories to अभी come. अगले कम से कम 4 से 5 पैच के अंदर Exactly. एटलीस्ट 4.6 या So be sure to 4.7 play तक वर्ल्ड through, क्वेस्ट आएंगी। uncover hidden जैसे truths, सुमेरु में आई थी ना, and डर्ज ऑफ witness this बिल्किस, epic chapter of गोल्डन Fontaine's स्लम्बर, history for इस तरह की yourself वर्ल्ड क्वेस्ट आएंगी when बड़ी बड़ी। Act 5 of पक्की the बात है। Archon quest becomes available.
स्टोरी क्वेस्ट होगी फुरीना की, नाविया की, इन सब की स्टोरी क्वेस्ट होगी. Question. Have we forgotten a pretty important character who's been missing from the Fortress of Meripede? Oh, yeah. Oh, you mean Child? Yeah. 4.2 में खत्म. We searched all over the fortress for him. Yep. I guess we'll just have to live with this 4.2 में suspense for खत्म a नहीं होगा. little देखो longer. तीसरा पैच है. अब Not समझ ideal, रहे हो, but 4.0 भी it's पैच होता है, fine. 4.2 दूसरा पैच है, तीसरा पैच है. 3 महीने हो गए Fontaine को आए We हुए. saw Child appear at the end of the last version's Arkhon quest, so it probably won't be अभी तो long डेंसलिफ वाली है, until we जोरो see सही them कर रहा है. again. अभी तो इंटरलूड क्वेस्ट आएगी भाई But डेंसलिफ के we साथ. really need to talk about असली Furina. हाइप तो उसकी ज्यादा होती She's है. confronted with because she's confronted with a crisis that's tough for even one of the great elemental dragons. Of course, Fontaine will have the travelers help, but what choices will our Hydro Archon make in the face of the crisis? Well, just like the prophecy itself, all will be revealed at the fated time. आवाज नहीं आ रही मेरे में भाई, मैं क्या But कह सकता हूँ कि तुम्हारे में आवाज क्यों नहीं आ रही. perhaps she'll have made चेक कर लूँ, some मेरे में तो आ रही है ना आवाज. preparations. हाँ भाई आवाजें दोनों बराबर चल रही हैं, कोई दिक्कत Once नहीं है. again, disappointed. Oh, yeah. No way. Come on, guys, have some faith. डेंस क्वेस्ट इक्वल कोटेड क्वेस्ट. Okay, यस. to bolster everyone's confidence in Furina, let's learn a little more about this one-of-a-kind लो जी Archon. फुरीना की किट आ गई. फुरीना किट, फुरीना's kit here. Why are you just standing there with your mouth gaping? You must be stunned and at a loss for words. Understandable. It is I, after all, Fontaine's most beloved star, Furina. I'm on a very tight schedule, so you're lucky to even वो get an लड़की शायद चाइल्ड की appointment मास्टर with है. me. यस यूर राइट. स्कर्क होगी वो. Oh Child's my master. gosh, I love her outfit. Mm. Yes. Oh, and her eyes, like each of them are different. She's got these little eyelashes and her hat. Oh, You know, it's amazing. you'd expect for a Hydro Archon that she'd have the best चाइल्ड drip. एवरीवेयर. Oh, Yes. Ooh. चाइल्ड का इमोजी स्पैम करो सब. जिसको Okay, स्पैम you करना know है. what? स्पैम It चाइल्ड seems इमोजी. as if she's always dressed like she's about जो to क्या कहते attend हैं a members हैं, performance. You know what I obviously, और mean? कौन करेगा? Yes. That's Fontaine's biggest celebrity for you. And speaking of drip, मैं कहूँ let's take a look इमोजीज at आ her क्यों नहीं रहे combat यार. ability. अभी ध्यान है इमोजीज क्यों नहीं आ रहे. Yay. इसलिए नहीं आ रहे. पॉप आउट चैट अब आएंगे. Being too popular can be such a hassle. Who knew the people would अब आएंगे. adore दोबारा me स्पैम so करो. much? अब नजर आएगा. वो स्क्रीन पे क्यों नहीं आ रहे. अब आएंगे. strike a pose. Let the world come alive. चाइल्ड ही चिल्ड्रन. मिनासे इनोरी सवास. whoa, that is मिनासे so इनोरी. cool. Oh my gosh. Oh my gosh. Ainori. I like Minase the way Ainori. Japanese she voice kind of artist. like bows. Very dramatic. Mhm. Yes. Very much. It's like all of her moves इमोजी are मेरे part कीबोर्ड of पे a नहीं है ब्रो. ये Totally. ये क्या कहते हैं जो Also, मेंबर्स हैं look उनके at लिए her है. डेविड elemental burst. Her presence really डेविड जो fills मेंबर्स the हैं stage. सिर्फ वही यूज कर Everyone सकते हैं else is इमोजीज. just an extra. Mhm. Wait, so the creatures that Furina summons, they look a lot like the कितने कोड्स आए अभी तक? अभी एक ही we've है. encountered before. One so far. There's a तुम्हें डिस्कॉर्ड seahorse, सर्वर में a मिल जाएगा, crab, टेंशन ना लो. an वहाँ पोस्ट कर रहा हूँ मैं. and they are all so cute. Yep. Oh, I love them. Me too. Oh my gosh, no, the octopus is even wearing a hat. What a distinguished little gentleman. Correction here, Sarah. They're a bit different from Fontamer aberrants. Okay. I would know. To my knowledge, these creatures are Furina's, quote, honored guests. They even help manage her अल्ट्रा daily affairs. वेलकम. Yes. गाइस Exactly. लाइक दबा दो किसी ने नहीं किया अब So, तक तो. Furina often invites guests to her tea party, which is known as the Salon Solitaire. कितने कोड आ गए? अभी एक ही आया है. And those 1-1. creatures are actually special guests of the Salon Solitaire. Aww. And she even gave each member a name. Oh my gosh. Yes. So you've got the maid, Mademoiselle Craboletta. They're the best. अरे भाई ऑक्टोपस की है, The one क्रिएट that's a करती crab, है I क्या assume. जो इतना बड़ा खिला के बोल रहे हो. Yes. फन. And ये then you've फरीना got the को. housekeeper, Sir Intendant Cheval Moran. Ah, there he is. And the conferencier. अभी से क्यों मिड बोल रहे हो? अभी इसको आने दो बेचारी को, रिलीज तो होने दो. अभी से मिड बोलना शुरू कर That दिया. last one is a stickler for propriety. Oh, okay. So when Furina said to make an appointment with Surintendant Cheval Moran, this is who she was referring to? Yes. Oh my god. Wow. I didn't know it
is so cute. Give me code. Discord में दिया हुआ है. Spew bubbles in her idle animation. Child versus Newlet हो गया my उधर से. मुझे नहीं gosh, लगता. I that's don't think कि दोबारा से adorable. ऐसा कुछ होगा Okay, ये. I'm sure everyone is just itching to know more about the skills shown in that clip. So, Amber, why don't you take it away? Tell us everything. Yes, you got it. Furina की voice artist का नाम है Amber. Furina is a Hydro Sword user. Okay. Mm-hmm. Okay, Kate आगे guys ध्यान She से. usually defaults to an Usia Arca alignment in combat. When in this state, her Ultra, elemental thank you for skill one invites gifted the membership. 3 members of the Salon Solitaire, Arigato, arigato, Mademoiselle arigato. Craboletta, Sir Intendant Chevalmaron, and Gentilhomme Usher to the stage. I love it. It's so cute. And, you know, these Salon members will attack nearby opponents, prioritizing the target of the active character. Ooh. Their damage increases the more characters there are in the party over a Okay. certain HP amount. Okay. Okay, I was listening to all that, but at the very top, you said that she usually defaults to an Usia Arca alignment. So she has more than one alignment? Yes, exactly. David को मिल गई. अरे वाह क्या बात Furina's है. charged attack not only deals physical damage, but also allows her to switch between Usia and Numa David, Arca alignments. Congratulations, you got the membership Based on 1 what we month. just saw, it seems like her Arca alignment has an चलो. effect on her other skills as अब well. यूज करो. अब यूज कर सकते हैं Sure मुझे तुम. does. Check करो. Furina's elemental skill changes depending on whether she is aligned with Usia कितने or कोड होंगे? 3 Numa. कोड होंगे अब्दुल्ला. 3 कोड आएंगे. अभी एक आया. Super cool. After Furina uses her charged attack to switch to a Numa Arca alignment, her elemental skill summons the Singer of Many Waters to provide healing to nearby party members. Okay, healer. Nice. Yes. The summons created by Furina's elemental skill will remain on the field for a period of time even after Furina is switched out. Furina's elemental burst deals damage to surrounding opponents. And when the party member's HP increases or decreases, Okay. Furina will accumulate fanfare points. That's my trumpet. Amazing. So Furina increases the damage and the incoming healing bonus of nearby party members based on the amount of fanfare she has. Wow, it seems like this fighting style really तो suits टीम के Furina's अंदर अगर character. It's ये very है, showy and Risley है unpredictable. अपने weapon के साथ. Totally. I can already see the fluctuations in my team's HP bar. That healing और skill दिया might है. come in handy. Yeah, for real. तो इसका डैमेज बढ़ेगा. And due to her knowledge of Deepwater Aberrant, She will- Furina's passive talent can decrease the cooldown on abilities gained from the xenochromatic Fontaine Aberrants. Ooh. Wow, you can say that again. Yeah, and Wow. that'll make it even easier to uncover the secrets lurking in the depths. Always the secret. Unlimited skills. Unlimited skills under the water. I almost forgot. Whenever one of Furina's summons is on the field, Furina gains the ability to walk on water. Oh my gosh, Wow. that is so cool. Yes. Hey, I actually saw that Furina's outfit changes whenever she switches between Arca Oh alignments. yeah. Yeah, good eye. You're correct. you. It does change. But, you know, such is the charm of a celebrity, I suppose. Yes, so if you want to learn more about Furina, Animula then be sure Shoragi to Chapter accompany 1, new her quest on story. her story quest, the Yes, yes, Animula yes. Shoragi chapter. Congratulations 1K. Thank you so much. So next अरे up, we तुमने have भी सब वो another ले ली, old membership ले ली. friend to introduce. Child centered She's education. वाह now वाह क्या able बात to है. join the traveler's party with her trusty companion, Monsieur Verite. That's right. Welcome. Charlotte. Oh my God, Kokomi who? Yay. Yes, Kokomi who. Cute. Charlotte आ रही. Charlotte के बारे में We've किस known सुनना है? Charlotte for जी. a while now. Charlotte के बारे में किस Traveler सुनना है? met her during the But, Summoner's Summit event, which took them on an adventure all over Tibet. एक मिनट पहले Yes, सुनते चलो. that's सुन ही लेते हैं right. Charlotte के बारे में. Charlotte's hard-hitting spirit and Unlimited walk on determination water. to uncover the truth really leave an impression, don't लेकिन they? कौन से वाटर पे? That's Is she able to walk During on our journey in all Fontaine, waters? didn't she treat the या खाली traveler to a फाउंटेन के वाटर में वॉक कर सकती है, सारे वाटर पे वॉक कर सकती है, ये नहीं Wisely. पता. Though she didn't end up getting the interview. That मैं कह रहा था कि फुरीना की टीम में अगर राइजली अपने वेपन के साथ है, दिया है और फुरीना है, इसको तो काफी सारा फैनफेयर मिलेगा. she'll become very OP उस केस के अंदर. Speaking of her camera, Monsieur Verite just so happens to be her greatest assistant and companion. They're friends. Charlotte's talent for photography is truly a marvel. No matter the subject or setting, her photos somehow always capture an unparalleled sense of artistry. ये नहीं पता कि उसका स्किल खत्म होता है कि नहीं होता. वरना इमेजिन करो लोग अब रील बनाएंगे वॉकिंग फ्रॉम लीवे टू इनाजुमा, पानी के ऊपर चलते चलते.
That's so cool. And Mr. Verte is so cute, even has its own little hat. अच्छा 30 seconds की स्किल है, 18 सेकंड का कूल डाउन, फिर तो अनलिमिटेड वॉक हो गई. Both of those items from Chiori. बाय बाय आइस ब्रिजेस. जो लोग आइस ब्रिज बना के जाते थे ना, बाय बाय. कोई ऑक्यूलाई अगर पानी के अंदर पड़ा हुआ है तो चलते चलते पहुंच के वहां पे. कोई तैर के नहीं जाना, कोई कुछ नहीं करना. बहुत बढ़िया. शाबाश शाबाश. Her own Monsieur Verite. Yes, it really does. Risley C1 plus Furina is broken. Combo enemies will die before Abyss Floor's countdown starts. Yes. True. Keep your eyes peeled and your mind engaged. लो भाई, शार्लेट की किट देख लो. There's always a new story nearby just waiting to be discovered. Ultra, thank you for upgrading the membership to the Fatui. Welcome. Thank you so much. Say cheese. तो चार्ज अटैक कितना बढ़िया है इसका चार्ज अटैक कितना बढ़िया है. कैमरा लेके घूम रही है उसकी तरह, नाहिदा की तरह. 4 स्टार नाहिदा गाइस. 4 स्टार नाहिदा गाइस. It's just what you'd expect of a reporter for the Steambird. Even her Why you walk combat from skills Inazuma involve to Fontaine if you taking have teleport photos. point? Yeah, I mean, people it make was videos like about a it. lively That how much character. time Her combat it would like actually I was take to saying, walk or she's swim moving there. super So it's up to them. dynamic. It seems like she's शार्लेट किसको चाहिए हटाओ उसको, always on the move. जिनको फोटो खींचनी है. Lives in Inazuma without Arkhon quest impossible है क्योंकि थंडरस्टॉर्म. अरे जिनकी नहीं हुई वो तो कर सकते हैं ना, जिनकी हो गई है Arkhon quest. Other areas of her life, and that includes combat. With her trusty companion, Monsieur Verite, she captures enemies from all angles, unleashing attacks while discovering and exposing their weaknesses. Cryo catalyst Honestly, एक और guys. I would expect nothing more less cryo from one of catalyst. Fontaine's most famous reporters. Who knew cameras could do that, though? I didn't know you could use them as a weapon. The more you know, I guess. Okay, here's some cool stuff. Charlotte's elemental skill applies snappy silhouette to opponents caught within the viewfinder of her camera. During this effect's duration, marked opponents will intermittently take damage. Holding Charlotte's elemental skill strengthens these effects and applies focused impression to opponents instead. Now her elemental burst creates a news flash field that continuously restores HP to party members within its range. Healer. Monsieur Verite, he's also going to join in and intermittently attack opponents during the duration of the ability. As an experienced reporter, Charlotte is an expert at adapting her methods to match the needs of her target. When paired with Fontaine characters, Charlotte receives a healing bonus. When paired with non-Fontaine characters, she receives a cryo damage bonus. Now that is not all. There is more. During the 4.2 special event, travelers can complete a quest to receive a special gadget called the Zoom Lens. When Charlotte activates the Zoom Lens, it will trigger her passive talent called First Person Shutter. Oh my gosh, that's When you amazing. hold her elemental skill, the gadget will cause you to enter photo mode instead. That is so cool. Yep. लोगों ने अब जूम कर करके सेलेस्टे की फोटो लेनी है और कुछ नहीं करना. सेलेस्टे की फोटो आएगी जूम कर करके. Are gonna come out of that. Oh yeah. We are going to provide more information about the zoom lens and how to use it during the event overview. Genshin going out of ideas. So, Furina and Charlotte will both be featured Baiju in के version साथ 4.2 phase Event Wishes. Ooh. In Phase the 1 guys, first phase half 1. of version 4.2, we'll have Event Wishes showcasing Furina and Baiju. During this time, Charlotte will also Last chat, receive sorry, a that was के Risley huge them, वही नहीं, drop Risley rate take Risley at home. boost. Yes. Huge boost. Huge boost. A new 5-star sword, इस- Slender of Tranquil Waters, will इस be weapon featured banner in पे the इतने लोग weapon रोने event वाले हैं ना. banner. इस वेपन बैनर पे इतने लोग रोने वाले हैं कि मैं क्या बताऊं. And in the second half of version 4.2, we'll have reruns for Sino Let's take and photo in Aya. Shibuya. Oh, Okay, Shibuya, let's so take a look at beautiful, what so other beautiful. information we can learn from Furina's itinerary. It looks like she's क्या हो रहा है Thriller? investigating something. Genshin की 4.2 Oh, there's update का even a live stream report चल रहा है. attached. Tell us what it says. Okay, I will. It says, strange rumblings have been heard All in the devouring depths of narwhal. Fontaine's Okay. waters. So guys, it's not actually a whale, it's a narwhal. Oh, it's here already? नारवाल और whale में फर्क होता है. Oh. Look at that! भाई तो राइडन के ये तो राइडन के डोमेन से बड़ा डोमेन है भाई. It's like it's in a sea of pink and blue. एज दाहा हु? कौन एज दाहा? ये हो गया सबसे बड़ा बॉस. Wait, yeah,
Isn't this the whale that the traveler saw in Last Child's chat. vision at the end of the version Boring. 4.1 Arkhon Boring. quest? अच्छा जी. Yep, it's I need the Femine. same You don't have one. Femine? After ravaging its way through the primordial Pretty sea, soda, not this universal. otherworldly creature has at long last कौन से 5-star broken the कैरेक्टर seal ऐसे and हैं descended upon जो क्या कहते हैं Fontaine. यूनिवर्सल हैं? कोई भी नहीं है. क्या बात कर रहे हो यार? It's real big. It feels That's not like a it whale. might even burst straight through the screen. साइज बड़ा होने से कोई वेल नहीं हो जाता भाई. It's not a whale. It's a narwhal. Feeling that this isn't the type of opponent that we can just brute force our way through, you know? Exactly. In the Peanut first Weekly phase, it version. will use its gigantic size to target the traveler with massive AoE attacks from all directions. Dodging is definitely your friend with this one. Oh boy. Okay. So there also seems to be sort of a progress bar next to the boss's HP bar. Yeah. What's that for? Okay, since we can't outfight it, we'll have to outsmart it instead. The Okay. creature just freed itself from captivity and is brimming with anger. So if you can find a way to capitalize on that anger, perhaps you'll also find its weaknesses. Oh, Ooh. okay. Wait. Is somebody being eaten? Is it even possible to survive something like that? I guess here it is. Ooh. This is an entirely different space, it looks like. And there's a new enemy अबे here Storm Terror का कहाँ से with आ a गया? massive sword. ये हम सीधा Storm Terror लेयर में कहाँ से पहुँच गए? Storm Terror लेयर नहीं लग रही? Creatures also look vaguely What the hell is this? I wonder what the deal is with all of this. Perhaps defeating this mysterious enemy within this space will be the key to defeating the whale? Travelers will need to experiment for themselves. Ooh, yeah. All truths will be revealed in version 4.2. Okay, interesting. Very interesting mechanic. No doubt. Oh man, this boss looks really tough. What happens if we, for some reason, can't defeat it? Ooh. Okay, this update actually helps with that problem. Starting from 4.2, an option will appear on the challenge failed screen to lower the difficulty of the boss if travelers are struggling to defeat them during a Lower main the quest. difficulty of the boss. Low Hopefully, भाई. this provides a smoother gaming experience for travelers to enjoy. Low भाई. I love that. Now we don't need to worry about getting stuck while trying to advance the main story. Totally. जितने लोग ये बोलते हैं ना कि अरे that was a यार lot. हमारा आके बॉस मरवा दो, मारा नहीं जा रहा. अब you can lower the difficulty of the boss. ये बताओ. Yeah! Ooh, yeah. Let's do it. New NTQP2 NTQP2 KPEJ MUH MUH. ये वीकली बॉस है ना, ये वीकली बॉस है. आई नीड हायर. माइकल, यू कैन गो हायर बट नॉट ऑल ऑफ अस कैन गो हायर, राइट? लो गाइस, जिसको प्रॉब्लम थी कि हमसे बॉस नहीं मर रहा, हमसे वीकली बॉस नहीं मर रहा, हम अटके हुए कहीं पर, नाउ यू कैन लोअर द डिफिकल्टी ऑफ द बॉस. तो चाहे तुम जिस मर्जी लेवल के हो, अब यू कैन डू ईच एंड एवरी बॉस नाउ इजीली. सबसे पहले जाके उस एजदहा का लेवल लोअर करके मारूंगा उसको मैं. सवास. नारवॉल भाई, नारवेल. वो वेल नहीं है, दैट्स नॉट अ वेल. अब पता चला, लोग कह रहे हैं ना दैट्स अ वेल, दैट्स नॉट अ वेल, दैट्स अ नारवॉल. नारवॉल इज सॉर्ट ऑफ Hello, अ डॉल्फिन. travelers. Welcome back to the version 4.2 special program. Hello! Hello. Hello, Yay! hello, hello. So, we've introduced new characters, new plot lines, and a new boss. But I hope you're still eager for new content, travelers, because Yes. there's still more to come. Please. Let's take a look at what other information we can learn from Furina's itinerary. Please. Give us more content. Okay, aside from investigating crises, it seems like our Hydro Arkhon cake Archon showcase, नहीं also मिलेगा. goes on occasional excursions throughout Fontaine. Who knew she did all this work behind the scenes? New area showcase about Lakelet and Foggy Forest, the terrestrial maybe tree, and she's just Fathomless using it Tower. as an excuse to scout out a place for one of her tea parties. Oh. Furina and excuses. एजदहा easy. कहाँ easy? Hey, Give it us more seems like primos. the मिलेंगे, places अभी Furina has मिलेंगे. chosen to visit this time feature some peculiar landscapes. Oh, yeah. It looks like Furina is in Aranea's forest on the east side of Fontaine. And that's right behind the Opera House. Ooh. What a cool place! Although, it does kind of look like it could be hiding some secrets. Definitely wouldn't be a video game if there weren't secrets. बहुत easy है एजदहा. Definitely भाई नए not players के लिए what नहीं we होता. see here. For example, मेरे जैसे. strange things have been happening with the water veins around Loch Urania,
As you can see, a strong windstorm has gathered around the vortex rising from the middle of the Damn. lake. It's almost like it's preventing certain things from getting closer and forcibly pushing other things away. And take a look at this, the foggy forest path. That fog is really thick. Yeah. That's Sundar, what they call Sundar. the foggy forest path. Akshat, welcome What to the about this stream. area? Ow. The weeping willow of the lake. Ooh, it looks all withered and And spooky. the water doesn't look quite right. Like ये तो it's Genshin और cloudy Genshin or के पेड़। something. Do you see that? Yeah. गैंशिन ससुर ट्री डिजाइन बड़ा अच्छा बनाता है. Realized something was off. It looks like she headed underwater to investigate. And what did she find? A number of contaminated bacterial mats. Uh-oh. Speaking of, there are always new things to discover beneath Fontaine's waters. In this update, we'll encounter a new type of Fontamer aberrant, the xenochromatic ball octopus. Ooh. Travelers can borrow its abilities to cleanse away the contamination clots and contamination cores from the bacterial mats. Okay. In addition, with the help of a special device, travelers will be able to use this creature's abilities on the surface as well. They may be the key to solving certain puzzles or perhaps even powering certain objects. वाह. But we'll leave that for you to discover. Ooh. To learn more about the story मैं behind only the 11 new months से Arenes खेल रहा हूँ, Forest मैं उसको region, मार देता हूँ be Deluxe sure से to भी. check out the Okay. version 4.2 Cool. world quest called हमसे The पूछो Wild कितना Fairy टाइम of लगता है इजदा को Arenes. मारने में. सही बात Give you a है. hint. अब्दुल्ला ये समझते नहीं लोग ये. Melusines are involved. Melusines? Really? Genshin indirectly tells you to touch some Oh, grass, then it इसलिए वो would tree certainly be a world designing quest that you detail won't करता है. wanna सही बात skip. है. To the south of Huge Arenes world quest Forest, incoming. Yes, you'll find huge world the quest Mortal incoming. region. सही बात है. There, a singular tower stands tall above an island. यार ये बताओ ना, थर्ड पैच के अंदर ही फॉन्टेन की मेन आर्कन क्वेस्ट खत्म कर दी. अब बाकी के बाकी के कम से कम अगर 4 पैचेस भी आते हैं, अगर 4.7 तक भी आता है, तो भी इनको कुछ तो क्वेस्ट देनी पड़ेगी ना. तो बहुत बड़ी वर्ल्ड क्वेस्ट आने वाली है. Travelers noticed this tower since they've arrived in Fontaine. जैसे सुमेरु के अंदर थी ना, सुमेरु के अंदर कौन सी थी? गोल्डन स्लम्बर एंड द डर्ज ऑफ बिल्किस. दो बड़ी बड़ी वर्ल्ड क्वेस्ट थी. 4.2, the sealed ruin tower is the focus of a quest series called Search in the Algae Sea. I know. ये तो स्टॉर्म टेरर का टावर जैसा लग रहा है. Unlocking 4 seals along its perimeter, the tower and its long buried secrets will be unveiled to us. Oh, amazing! Okay, it would Arnara feel great 2.0 to with finally small demystify species. all the secrets churning under the नहीं नहीं seemingly नहीं calm आरनारा नहीं waters. चाहिए. Yes. गाइस लाइक दबा I देना want किसने नहीं किया अब answers. तक तो. I also we all want answers. I also heard this quest has something to do with the primordial sea. It seems like there's a very important and very ancient story behind it all. That is very right. New stories are always unfolding in Fontaine, whether above 45 water or minutes की below. रहेगी. And this is not limited to the 2 new सही बात है, regions in सही this बात है. update. The prophesied earthquake woke up new life forms New in boss other आ गया, places Hydro where Tulpa. destinies intersect. ये कैसा नाम है? टल्पा. Oh, Destinies! ये कैसा नाम है बे? हाइड्रो Certain टल्पा. underwater cave, a new life form is waking up. It has greater and more diverse powers of transformation while in combat. So don't let your guard down, travelers. Yes. And some places still seem to tell the stories of events long past, no matter how long they've been abandoned. So, in this update, travelers can also look forward to the climax of the Narcissan Croix's adventure questline that was introduced over the last 2 versions. And there might even be an unexpected surprise waiting at the end. What? A surprise! फ्री कोड दे दो मैं चला फिर. 2 तो दे दिए, एक और आ रहा है. Same. All right, there's a lot to discover in भाई the new आरनारा areas भूल of the गए map, लगता है. but भाई Furina's सुंदर. itinerary doesn't stop there. Oh wait, it looks like she's arranged to spend some time with her subjects. Aw. Furina is pretty Banner बता दी, personable. yes, banner Who's to बता दी. say? She might even make an appearance at the events taking place in Fontaine. Speaking of, विवियन निनियन के let's पापा move जैसा on to लग the रहा है टल्पा. सही बात है. All right, the Fontaine Fishing Association 4 has stars नहीं आए recently अभी तक. हाँ, posted 4 a stars नहीं आए अभी commission तक. to investigate the rumors of water लो जी nymphs फ्रेमिने मिल रहा है फ्री में. in माइकल, Arenes you're getting your Ooh, Femine another for free. investigation. I know. Oh, and Femine seems to be involved. That little clockwork penguin next to him must be one of his other companions. But it doesn't look like Pear. Actually, its name is Thelxie. The name comes from a Fontanian fairy tale that describes a terrifying creature that lives underwater. भाई कोड आ Adults गया. would यस कैन use the कोड्स story आर to keep हियर. children और away कोड from मैंने अपने shore. डिस्कॉर्ड में डाल दिए हैं. As the story goes, children who play by the water are food for Thelxie to devour. Ooh. मैं भी लास्ट कोड के लिए बैठा हूँ. आर्कन पे तो सुमेरु की चल रही Well, है. children must be अच्छा. pretty afraid of that माइकल को creature. फेमिने नहीं मिला. नहीं मिला I know, होगा. right? It does
seem a little he unusual just for said that he Fremine wants to give Femine, this so little that's why I penguin said a name like that. that you're getting your There Femine. must be some other reason. Wait, hey, does this event also have something to do with this clockwork penguin? Absolutely. In this event, we'll be helping Code Fremine 3 आया make नहीं some आया अब तक. improvements to this little clockwork penguin. Not yet. There will be a total of 3 main stages to the event. As for the first stage, we'll repair the penguin by fixing its circuits and reconnecting the motherboard. In return, the little guy will help us out on our journey. Oh, I love Pretty cool. that. अबे ये वाला As तो our क्या journey कहते हैं अभी progresses, HSR के we'll अंदर आया collect था. colorful shells, corals, and other items which can be used to outfit our little friend with weapons and equipment. अबे ये वाला इवेंट तो अभी HSR में आया था. ये लाइनें कनेक्ट करनी पड़ती है, तो होंका स्टार रेल में था इवेंट. Find the items that we need for the penguin. And you know, what happens if we run into certain speed bumps on our adventure? You know, like monsters, puzzles, and all that jazz. Well, it seems like the perfect opportunity for our little penguin buddy to shine. Exactly. In the third stage of the event, the clockwork penguin will help us defeat monsters lurking around a specific क्यों डरा रहा domain है? and obtain any treasures that they may be इससे guarding. अच्छा बेनी या शिंचो Of दे course, देते. भाई वो the clockwork वैल्यूएबल penguin कैरेक्टर्स है will ना, ऐसे नहीं provide मिलते वो. different buffs in each battle to help travelers emerge victorious. Whoa. Now, as for the story behind these battles, travelers will just have to find out for themselves. Let's see. After helping the penguin, the next item on the itinerary is... Oh, the cute little fungi are back! ओ हाँ, फंगाई वाला इवेंट भी Furina, आने a वाला friend we है. met in Sumeru, has arrived in Fontaine to promote Lil Fungai's Pokemon Part 2 आने वाला है. Oh, and speaking of Guys, like दबा दो किसी ने नहीं किया अब तक तो. guys, I think I recognize some familiar faces. Bongo Head, it's time to shine! Yay! मस्त है अपडेट. आई एम हैप्पी. चलो बढ़िया है. तुम्हें खुश होना चाहिए प्रतीक. तुम खुश नहीं हुए तो फिर मैं अभी होयो के पास जाकर क्या कहते हैं उनके दरवाजे पे सुसु कर देता. The gameplay has also been optimized. Previously, we led the Lil Fungi in battle against Mechanici. This time, we'll have the opportunity to challenge a whole Michael, host why of are you powerful crying? You're monsters. getting your free Femine. Awesome. They just Travelers announced will be able to command that there is a free variety Femine of now. fungi, adjusting their movement to target different David enemies. भाई उन And भाई don't को forget to C60 use Bennett marvelous मांगता है. gels to instruct the little fungi to unleash Narwhal. powerful skills. Yes, Narwhal. Yeah! Travelers will hopefully enjoy playing with the fungi more than ever. Here's hoping. We actually, I have a little note here to pass along from our developer friends. It's the note I'm unfolding. While they hope to make the little fungi and some other events permanent so travelers can play at any time, the team feels that the current design doesn't adequately sustain long-term gameplay. So, they're going to continue iterating, optimizing, and improving this event while also working hard to develop interesting content that is relevant to the overall ओ मुझे लगा ये वाला इवेंट वो करने वाले हैं, परमानेंट करने वाले हैं. ये करते मजा भी आता. क्या इन्होंने क्या कहते हैं TCG को परमानेंट किया हुआ है, बेकार सा कंटेंट. Where Femine? So there's gonna come what do you say, an event quest, and in that event quest rewards there is free Femine. I'm more than ready to fight some adversaries. Let me at 'em! Michael, you're a boy or girl? I wish I could, but it doesn't actually involve fighting. A researcher Michael, you're obsessed breaking with a lot of fast hearts. adversarial technology People has made are great not sure if you're a boy or girl. contributions to the study of counter-criminal Please say you're a image girl so recognition. that they can She get believes over that her it, research you know. can help her achieve great success. But Plant her versus scholarly zombies. हाँ वैसा ही लग रहा है responsibilities make it कुछ. difficult for her to collect the field samples that she needs. I'm guessing this. कैरेक्टर is where मैच the कर रहे traveler तो comes इवेंट in. क्या चीज़ है. सही बात Okay, है. you're not wrong. But Pauline's request is actually pretty Me reasonable. hybrid. To receive rewards, simply submit photographs No, of David, 5 different जवाब मिल गया sample तुम्हें. types Michael to is match the hybrid. characteristic that's given on each day. Sounds simple enough. You can also exchange these samples with your friends. You might be able to find useful references for the samples that you अबे need क्या to बेकार collect events in the हैं यार. Adventure Archive. At वो the अब end बोर of the कर रही है. quest, travelers will receive a special gift from Pauline. Ooh. Okay. That's right. It's the zoom lens we mentioned during Charlotte's character introduction. Oh, how ये fun. zoom lens जो To है. use it, just equip the camera and activate the zoom lens in your inventory. The zoom lens can be attached to all cameras obtained in the game up to this point. When equipped with other characters, the zoom lens won't be able to be used in combat, Bye. but if you switch to Charlotte and hold your elemental skill, you'll be able to snap pics with zoom lens even while fighting. You can even use it in domains. Ooh. लोग zoom lens से zoom कर करके Celestia की फोटो लेने वाले हैं और कुछ नहीं. Travelers will be able to capture some amazing moments in co-op mode too. And even if you miss the फिलर पैच लग रहा है ना. मैं भी ये कहने वाला था. फीलिंग इसमें से आ रही है फिलर पैच. travelers Me being a girl sitting in corner. बताओ डेविड, यहाँ पर एक्चुअल में लड़की बैठी है, तुम्हें उसमें इंटरेस्ट नहीं है,
और जो माइकल है उसके पीछे तुम पड़े हुए हो कि लड़का है या लड़की। Learned of the existence of a domain shrouded in mist. Travelers who Mahi, you are too master the old. leyline features and put together बताओ। the माही क्या बोल दिया ये? will be able to easily beat their opponents. बेचारी को टू ओल्ड Now, बोल दिया। less experienced travelers like myself don't need to worry either. Using trial characters and taking advantage of the buffs brought about by the leyline are also great ways to come out on top. यूला की फोटो। And travelers who are more अब समझ आ गया। confident in their combat skills can मैंने तो कुछ ज्यादा तुम लोगों को भरोसा कर लिया कि तुम लोग क्या कहते हैं सेलेस्टे की फोटो लोगे, तो तुम अपने वर्ड में बुलाओगे यूला को और यूला से अलग अलग पोज करा के मेरे ख्याल से तुम उसकी फोटो लेने वाले हो। मैं समझ गया। now might be the perfect time to start building your parties. Hopefully your मेरे को वेलकम मिलेगा, डेविड पार्टिसिपेट कर लेना, पता चल 4.2 has जाएगा। in store, but there are still more surprises to share. माही तुमको ओल्ड बोला, मैं तो ना सहता। Them. Well, before अरे we माही get to अच्छी them, है, let's she's take a good break kid। to have a look at the final तो वो इतना redemption वो code बुरा for नहीं today. मानती। See you in a bit. Okay. ओके थर्ड कोड आ गया गाइस। थर्ड कोड इज हियर 9096K 9096K JNE2 LVM। डाल दिया भाई, डिस्कॉर्ड के अंदर डाल दिया मैंने। ज्यादा कुछ तो बचा नहीं स्ट्रीम के अंदर, देखते हैं 5-10 मिनट और देखेंगे, अगर बोर करेंगे तो चले जाएंगे। मुझ पे यूला है, कौन है मेरे साथ? आएंगे, लेंस लेकर आएंगे तुम्हारी यूला से, यूला की फोटो खींचने। प्रीक भाई फिर तुम कॉलेज में लड़की ढूंढो, ये गलत जगह है। सही बात है। बैनर कौन से बता दो। Welcome back, travelers. फर्स्ट फेज के अंदर Okay, फर्स्ट फेज के अंदर आ रही है फुरीना बाइजू के साथ, सेकंड फेज में आ रहा है साइनो अयातो के साथ। 4 स्टार्स अभी कंफर्म नहीं हुए हैं। So we've submitted our appointment request to Surintendant Cheval Moran. While we're waiting to hear back, let's see what system optimizations we have for the upcoming version. Let's get into it. Okay. So first up is the quick challenge feature for weekly bosses. New Okay. players or players who prefer to spend their time exploring may have yet to unlock certain weekly bosses. And it's difficult to raise new characters when you can't access the boss drops needed to ascend a certain character. Totally. True. In version 4.2, travelers who are at adventure rank 40 or above will have the option to quick challenge a weekly boss by navigating to the Trounce Domain section of the adventure handbook. All weekly bosses will be available to challenge, except Storm Terror and the Wolf of the North. Nice. Yeah, now we don't have to wait Guys. for the story before we can level up a new character's talents and skills. Guys, it's getting easier. Also, we're introducing an update to It's getting easier. Quick start for weekly bosses. मतलब कि ऑटोमेटिक बैटल होगी। जो मुझे लग रहा है शायद वो यही है कि दे आर इंट्रोड्यूसिंग ऑटोमेटिक बैटल्स की बटन दबाओ, बैटल अपने आप पीछे पीछे हो जाएगी और तुम्हें तुम्हारा मटेरियल मिल जाएगा, बार बार लड़ना नहीं पड़ेगा। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि शायद यही है क्विक स्टार्ट फॉर वीकली बॉसेस। आई गेस दिस इज व्हाट इट इज। or take inspiration from other travelers. That's cool. That's awesome. And बहुत सारी इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूवमेंट बहुत सारी कर रहे हैं, विच इज अ गुड थिंग। बेस्ट पैच ऑफ ऑल टाइम। This has the potential to become the best patch of all time, not going to lie. double. And in addition, TC जाते म्यूट। अब खेलता कोई नहीं और क्या, बात तो करूं मैं अपनी। slots unlocked at each player level upgrade have been Michael Dragon, don't cry. Double The, again. the developers have also made a number of optimizations to the Genius Invocation TCG ए interface. जीनियस इन्वेशन टीसी की बात मत करो, चलो उसकी बात करते हैं कि जो उन्होंने क्विक स्टार्ट फॉर वीकली बॉसेस लिखा हुआ है, अगर ये ऐसा है जैसे मैं सोच रहा हूँ कि आपने सिर्फ एक बटन दबाया, आपने अपने कैरेक्टर सेलेक्ट किया और वो कैरेक्टर बैकग्राउंड में अपने आप लड़ रहे हैं, ठीक है, तो मतलब कि इट्स गुड। लेकिन अगर खुद ही लड़ना पड़ रहा है तो फिर बेकार है, When you give away, I am thinking about it. Abhi today I crossed 1,000 subscribers. Now I will plan when to do giveaway. Within this week I'll do the giveaway, and the announcement of my giveaway will happen in my Discord server. Dots have also been optimized. Notifications that have In the already Anime Plus, been cleared will bro, no I have longer 0 reappear when logging star in on a different I am. platform. New player rate Quest यार 32 in 7 days में optimizations किसको will also पुल be करूँ? available in version Bro 4.2. किसको पुल करूँ? राइडन The का first बैनर one आने वाला है, pertains वेट to फॉर unlocking राइडन story शोगुन। quests.
travelers will now Wait get for to adding choose sugar. whether to accept a story quest after unlocking it. Whoa, nice. And hopefully, travelers won't be overwhelmed by a sudden influx of quests anymore. Oh, अच्छा. The update has also made notifications about prerequisite quests even Resin clearer, cap 200 making it करो easier यार. for players to वो नहीं proceed to होगा. certain content. That's awesome. It's not background में fighting. फिर क्या है? फिर क्या फायदा अगर background में fighting नहीं है तो? Oh, and it seems like फिर क्या that's फायदा all we हुआ? have for the latest version update. I guess that means it's time for the 4.2 special program to come to a close. Oh, Okay, I cool. know. Well, there's so much exciting stuff happening, and I know personally, aside from all the intrigue around the story and characters, I'm personally very jazzed for the Fun Guy event. Yes, how Quick could start you मतलब not भाई be? story complete नहीं करनी About adding पड़ेगी to so fight the much cool boss. stuff to this अच्छा game. For me, ओ. I love the idea of the combat. Got it, got it, camera. got it, got it. But for me and Monsieur Novelette, we are here for the नहीं. Melusines. नहीं but that is also good. बहुत सारे लोग सिर्फ इस चक्कर में रहते हैं कि यार कैरेक्टर मिल गया अब उसको अपग्रेड करने के लिए बॉस तक पहुंचने के लिए, जैसे कि वॉन्डरर का जो बॉस है, ठीक है, किसी ने सुमेरु नहीं किया और उनको कोई नया प्लेयर है जिसको सुमेरु का कैरेक्टर जिसका असेंशन मटेरियल वॉन्डरर के बॉस में आता है वो मिल गया बहुत जल्दी, ठीक है, वो भी लीवे में पहुंचा बेचारा, तो उसको कैसे करने को मिलेगा, तो उसको क्वेस्ट पूरी नहीं करनी पड़ेगी वहां तक पहुंचने के लिए, वो उस बॉस को पहले ही स्टार्ट कर सकता है. ये बहुत अच्छी चीज़ की है उन्होंने. दिस इज गुड. Bye. Toodaloo. I collected 25k primos in 7 days. This game is too good. वाह 25,000 primos in 7 days. यहाँ मैं 2 महीने से लगा हूँ तब भी जाके मेरे इतने हुए हैं. ओके तो क्या कहते हैं, अभी इसका मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा. आई विल मेक अ शॉर्ट वीडियो ऑन ईच एंड एवरीथिंग दैट वाज अनाउंस्ड, ताकि थोड़ा सा ईजी हो जाए समझना. अब वो वीडियो की फॉर्म में आएगा या वो शॉर्ट की फॉर्म में आएगा, दैट रिमेन्स टू बी सीन. ओके. And Michael, if you want to help me sponsor some Primo Gems for my 1000 subscribers, I'll connect with you on Discord. Abhi, right now I have not decided when I'll do the giveaway. It will be this week. I will announce the Discord on my Discord channel. मैं अपने Discord channel के ऊपर Discord वो giveaway announce करूँगा, तो किसी ने Discord join नहीं किया है तो description में link है, pinned chat के अंदर भी link है, तो join कर लो. ठीक है guys? न्यू प्लेयर्स के लिए होता है इजी, मिड गेम प्लेयर्स एंड गेम के लिए तो 100 आवर्स में भी 25 नहीं मिलते. हाँ ये तो है, स्टार्टिंग में कंटेंट बहुत सारा होता है ना, इतनी क्वेस्ट चल रही हैं, धक्का क्वेस्ट चले जा रही हैं आराम से. सही बात है, सही बात है. आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस इज परफेक्ट पैच. और कोड आएगा या ये लोग 300 प्रीमियम में टाटा बाय बाय कर रहे हैं? 300 ही मिलते हैं यहाँ पे, 300 मिलते हैं. अभी जब मेंटेनेंस होगी तो मेंटेनेंस में कम से कम 600 या 900 जितने मिलते हैं तब मिलेंगे. न्यू प्लेयर्स के लिए होता है. आर्कन मेरी तरफ से भी 2 स्पॉन्सर. क्या बात है अल्ट्रा, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. अनाउंस द डिस्कॉर्ड ऑन डिस्कॉर्ड चैनल. अंडरस्टैंडेबल. अनाउंस द डिस्कॉर्ड ऑन डिस्कॉर्ड चैनल. अरे गलती से निकल गया भैया, मेरे मुंह से निकल गई भैया, मेरी जबान टूट गई. मारो मुझे, मारो मुझे. ठीक है गाइस, चलो जी अब अपन चलते हैं. बाकी काम जो काम हम पहले कर रहे थे उसी काम में दोबारा आएंगे वापस. ठीक है, आए बाइंगन. हाँ चलो जी, ये तो पूरा हो गया है गाइज. ओके, नाउ विल गो बैक टू द वर्क आई वाज डूइंग. ठीक है, आप सबसे कल की स्ट्रीम में मिलूंगा और मैं रात को बैठ के डिसाइड कर लूँगा कि गिव कब करना है, कैसे करना है, और कल तक मैं डिस्कॉर्ड में अनाउंस कर दूंगा कि गिव कब होगा, कैसे होगा. ठीक है, थैंक यू एवरीवन जो आया लाइव स्ट्रीम देखने के लिए. साथ में एक टाइम था जब मेरी नॉर्मल स्ट्रीम पर इतने लोग एक साथ नहीं होते थे जितना मेरी लाइव स्ट्रीम की वॉच लॉन्ग पार्टी में आ रहे हैं. चलो, विच इज़ गुड, इट फील्स नाइस, इट फील्स रियली नाइस. नाउ आई फील लाइक आई हैव मेड इट. थोड़ा सा हमने कुछ डेंट मारा है इंडियन गेंशिन कम्युनिटी के अंदर, थोड़ा सा जोर मारा है कि ठीक है लोग अब आ रहे हैं, पीपल केयर अबाउट द ओपिनियन. ठीक है, थैंक यू एवरीवन जो भी आए. लाइक दबा देना जाते जाते, लाइक करना भूल गए हो तो. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. और आप सबसे मिलता हूँ मैं कल डिस्कॉर्ड पे मिलूंगा अभी, और कल मिलूंगा स्ट्रीम पे. थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ गुड इवनिंग, गुड नाइट, शबा खैर, सुबह मिलते हैं. टेक केयर गाइस, बाय बाय. ओताकू रशियन रेड नहीं भाई, रशियन रेड नहीं करानी. हर्ष लिरिक्स वेलकम टू द स्ट्रीम. टीटीजी गेम्स खत्म हो रहा है क्या? भाई खत्म हो रहा है, ये लो तुम लास्ट मोमेंट पे आ रहे हो. वाह वाह वाह. वाइट उल्लू रेड, पता नहीं किस किस की रेड आ रही है भाई. सायोनारा गाइस, चलो मिलते हैं स्ट्रीम क्या कहते हैं डिस्कॉर्ड में मिलते हैं. ठीक है, लीलाउच डिस्कॉर्ड में मिलते हैं, डिस्कॉर्ड पे आ जाओ. स्ट्रीम बंद हो रही है, द स्ट्रीम इज अबाउट टू एंड. ओके गाइस, टेक केयर, बाय. रशियन रेड, ओके जी, तुम रशियंस की रेड करो. टेक माई 6000. बाय बाय.